How are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about exponents and power. So let's start with that beta. So we have already learnt about exponents in previous class. In this chapter we shall learn some more rules of exponents and powers. So for example, here it is 2 into 2 into 2. So 2 हमारा कितने times आ रहा है? Yes, 3 times. So we just write it 2 upon 2 by 3 like that one. So next one is minus 4, minus 4, minus 4. So minus 4 हमारा कितने times आ रहा है? Yes, it comes 5 times. So we just write it like that way. In the same manner, we can write 1 by 3, 1 by 3. So 1 by 3 comes 7 times. So we just write it like that. Minus 5 by 9, we just write it in that way beta. So ये जो हमारा 4 है ये हमारा क्या है? एक्सपोनेंट. और 9 हमारा इसमें क्या बन जाता है? बेस होता है. So a numeral such as 1 by 3, 7 is called an exponential expressions. In 1 by 3, 7, 1, 3 is called the base and 7 is the exponent. Okay, so like that way. So we read 1 by 3, 7 as 1 by 3 raised to power 7. So we can just write it like that one and read it. So generally for any rational number a and a positive integers n, we defined a as a into a into a into a. That means a n times, that means a raised to power n is called the 9th power of a and is also read as a raised to the power of n beta. The rational number a is called the base and n is called the, yes, exponent, or we can say the power or index. Now look at the following examples. Here it is minus 1 raised to power 2. So that means minus 1 into minus 1 is equal to 1. Minus 1 को minus 1 के साथ हम multiply करेंगे. So we just get it 1 beta. Similarly, minus 1 raised to power 3, that means minus 1 को 3 times हम multiply करेंगे और आंसर हमारा आएगा minus 1. So next is minus 2 raised to power 4, that means minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. Yes, it's 16. And similarly next one beta. Okay, so also we have 5 by 7 raised to power 3, that means 5 by 7 को कितनी बार करेंगे हम? 5 को 3 times multiply करेंगे, so 125, and here we have to multiply 7 with 3 times, that is 343. Hope you understood. Same way minus 3 by 2 raised to power 5 का मतलब होता है minus 3 by 2 को we are just doing 5 times multiply over here, then minus 3 raised to power 5 means minus 243 and 2 by 5, that means 32. Hope you understood well. So now do you observe that when the power of minus 1 is any even natural number, the product is always 1. So minus 1 even natural number is equal to 1 beta. Okay. So now next, B part is when the power of minus 1 is any odd natural number, the product is also minus 1. So minus 1 odd natural number, that is equal to minus 1. So similarly minus 145 क्या हो जाएगा हमारा, is equal to minus 1, and minus 191 is equal to minus 1. And same minus 4 raised to power 40 हमारा बन जाएगा 1 and so on beta. Now C part is a negative rational number raised to an even power is positive. That means minus 2 by 5 raised to power 2 is equal to हमारे कितने होते हैं? If we are just multiplying minus 2, we get 4 and 5 into 5 is 25. Hope you understood. Now next is a negative rational number raised to an even power is negative. That means minus 2 by 3 raised to power 3 is minus 8 by 27.
minus 2 into minus 2 into minus 2. If we are just multiplying that number together, we just get it minus 8. Same way, 3 into 3 into 3 is equal to 27. Hope you understood. So now second, if P by Q is any rational number and N is any integers, then P by Q raised to power N हमारा इक्वल बन जाएगा P raised to power N upon Q raised to power N. That means 3 by 5 raised to power 2. That means 3 we are just multiplying 2 times is become 9 and 5 into 5 is our 25 beta. Hope you understood. So now solved examples. Example number 1. So here it is. Express each of the following powers of rational numbers as a rational numbers. So first one is 2 by 7 raised to power 4. That means we are just do 2 into 2 4 times is become 16. Similarly 7 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स. So ये हमारा बन जाएगा 2401. B part is given here. Minus 3 by 5 raised to power 3. That means minus 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स से. So minus 27 and 5 को if we are just multiplying here, so 125. Similarly C part beta. Hope you understood well. So now example 2. Express in power notation. So 8 by 27. That means 8 को हम क्या करेंगे नोटेशंस लिखने के लिए कौन से नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2. सो 2 हमारा कितनी बार आ रहा है यस 3 टाइम्स आ रहा है. सिमिलरली 27 3 इफ वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग 3 देन वी गेट 27. सो पावर नोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वन इज 2 by 3 raised to power 3. ओके एंड बी पार्ट इज minus 81 by 625. So हम कैसे करेंगे minus 3 and minus 3. So we are just multiplying minus 3 4 times and 5 multiplying 5 4 times. Then we just get it minus 3 by 5 raised to power 4. So this is the power notations of that one beta. Hope you understood. Similarly next part minus 1 to 43. So just take the LCM of that one and you know the idea that how many times 3 comes? It comes 5 times. So it is now minus 1 by 3 power 5 beta. Okay, so this is the power notations. Now example 3. Find the value of. So first one is 3 by 5 raised to power 3 multiply by minus 1 by 3 raised to power 4. So what we need to do, we just multiply 3 times, 5 3 times and minus 1 को 4 times and minus जो हमारा 3 है वो हम कितने करेंगे 3 times करेंगे. So just multiply all the number together and your answer is 1375. Hope you understood well. So 1 by 375 is the answer. So now next minus 2 raised to power 5 divided by minus 1 by 3 raised to power 4. So हम क्या करेंगे 2 को हम 5 times लिखेंगे like that way. minus 1 by 3 raised to power 4 को हम divide करेंगे like that way. Then reciprocal that number and after simplifying our answer is beta minus 2592. I hope you understood well. So now move on next one which is example 4. Simplify. So simplify कैसे करेंगे 4 raised to power 2 minus 3 raised to power 2 is divided by 1 by 5 raised to power 2. So for that one we just 4 into 4 हम क्या हो जाएगा number 16 and 3 को 3 के साथ multiply करेंगे so आ जाएगा minus 9. So now 1 is to 5 raised to power 2 को we are just writing here 1 5 into 5 then 5 5s are 25 and after reciprocal that number हमारा आंसर आएगा 175. Hope you understood.
सिमिलरली बी पार्ट में हमारा क्वेश्चन है 1/2 की रेज टू पावर 2. सो वी आर जस्ट राइटिंग लाइक दैट 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/4 रेज टू पावर 3. दैट मीन्स हमें यहाँ पर 3 टाइम्स लिखना है. आफ्टर दैट 2 हमारा कितनी बार है 3 टाइम्स. सो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2. नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग दैट नंबर आवर आंसर इज 15/8 बेटा. होप यू अंडरस्टूड द सिंप्लीफाई. नाउ एग्जाम्पल 5. Find the value of a6 minus b plus 1 raised to power 3 when a की value is given half and b is equal to minus 3/4. So, solutions. a raised to power 6 minus b plus 1 raised to power 3 is equal to a की value है half. So, just write it like that. हमने उसकी value put कर दी. b की value भी हमने यहाँ पर put कर दी. b है हमारा minus 3/4. नाउ जस्ट 1/2 रेज टू पावर 6 का मतलब हमें 1/2 को 6 टाइम्स लिखना है. एंड इन दोनों नंबर्स का हम लेंगे एलसीएम्स एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग दैट नंबर आवर आंसर इज 0. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ एग्जाम्पल 6. फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ. अब हमें रेसिप्रोकल करना है. सो -3 रेज टू पावर 4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, एंड हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे भी लिखना है. सो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, -3 बाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 -3 रेज टू पावर 4. सो 1 रेज टू पावर 4 -3 रेज टू पावर 4, दैट मीन्स -1/3 रेज टू पावर 4. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ बी पार्ट हमारा क्वेश्चन है -3/7 की पावर हमारी 3 है. सो हम क्या करेंगे, सिंगल ले लेंगे. -3 रेज टू पावर 3 लाइक दैट, और 7 को 3 हम लिखेंगे इस तरीके से. सो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका, जस्ट वी रिवर्स दैट नंबर. सो -7/3 रेज टू पावर 3 इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट वन. होप यू अंडरस्टूड. नाउ सी पार्ट is same beta. Okay, so now exercise 2.1. So first one is express each of the following rational numbers in a power notations. So first one is 9/64. So how we do this, 9/64. So write it 9/64 like that. So ये हमारा हो जाएगा इसका पावर नोटेशंस 3/8. So that means if we are just multiplying 3, so we just get 9 and 8 और 8 हमारा क्या बन जाएगा 64. I hope you understood well. So these are the other questions. You have to complete it your own. Okay beta. So now move on. Next one, which is 0 and negative integral exponents. So for any non-zero rational number a, we have a रेज टू पावर 4 बाई ए रेज टू पावर 4. इसका मतलब होता है हम a जो दोनों की पावर है उन दोनों को माइनस कर देंगे और हमारा हो जाएगा a रेज टू पावर 0. बट वी ऑलरेडी नो दैट a रेज टू पावर 4 को डिवाइड करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 1. दिस सजेस्ट दैट वी शुड डिफाइन a रेज टू पावर 0 का मतलब होता है 1. ओके, सेम सेकेंड वाले पे a रेज टू पावर 3 और a रेज टू पावर 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दोनों के एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो हमारा आंसर आ जाएगा a रेज टू पावर -4. और अगर हम इसको 1/1 करेंगे दैट मीन्स a रेज टू पावर 3 जस्ट डिवाइडेड a रेज टू पावर 7. सो दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा 1/a रेज टू पावर 4 लाइक दैट वे. And in this we are just writing this one beta. Hope you understood. Hence let a by b any non-zero rational number and let n be any positive integers. So a by b raised to power 0 का मतलब होता है 1 and a is a by b raised to power -n. That means हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, that is b by 1 raised to power n. I hope you understood. Now
laws of exponents for all integral powers beta. So let's see. Let a by b and c by d be any non-zero rational numbers, okay, and let m and n be any integers then. तो हम कैसे करेंगे? Let's see. Law number 1, a by b की रेज टू पावर m है, we just multiply next one a रेज टू पावर b को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है. सो ये जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं दैट इज़ m और n, ये हमारे क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं. सो वी जस्ट राइट इट a बाई b m प्लस n. ओके, फॉर एग्जाम्पल here it is given 9/17 raised to power -4. ओके, सो आपको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है दैट नंबर से विच इज़ 9/17 raised to power -5. सो हम क्या करेंगे? इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? यस, ये दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे. सो आंसर आएगा 9/17 -9, दिस वन. सिमिलरली b है हमारा -2/9 रेज टू पावर -3 है एंड हमने मल्टीप्लाई करना है -2/9 की रेज टू पावर 6 से एंड हमारा आंसर क्या बनेगा? दोनों के एक्सपोनेंट्स को वी आर जस्ट ऐड इट. सो आंसर इज -2/9 रेज टू पावर 3. होप यू अंडरस्टूड. सिमिलरली सी पार्ट बेटा. नोट, simplifications should always be done after making the exponent positive. Okay, so now law 2. So here it is given, first one a by b की raised to power m को हम completely raised to power n से सॉल्व करेंगे. तो ये जो हमारे एक्सपोनेंट हैं m और n, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो दैट मीन्स a by b m n. For example, here it is given 3/8 raised to power -3 and -3. So 3/8 -3 multiply by -3. So here it is 9. So 3/8 -9. Hope you understood. Similarly B part बेटा, इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा yes 5/19 raised to power 20. Hope you understood. Now law 3. So a by b raised to power m multiply with c by d raised to power m. So हम क्या करेंगे? दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे a by b इंटू c by d की कंप्लीट रेज टू पावर m. लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल 7 रेज टू पावर m को मल्टीप्लाई करना है 3/14 रेज टू पावर 5 से. सो 7 इंटू 3/14 एंड जो हमारा उसका जो पावर है 5. सो दैट मीन्स आफ्टर सिंप्लीफाइंग आंसर इज 243/32. सिमिलरली बी पार्ट बेटा. सो लॉ 4, a by b raised to power m divided by a by b raised to power n. सो डिवाइड के केस में हम दोनों एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे? आपस में माइनस कर देंगे लाइक दैट वे. सो एग्जाम्पल इज हेयर -3/5 रेज टू पावर 11 को डिवाइड करना है दिस नंबर से. तो जो इसके एक्सपोनेंट है वो जस्ट हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया और आंसर क्या आया हमारा? यस -3/5 रेज टू पावर 16. ओके बेटा. नाउ वी आर जस्ट मूविंग लॉ 5. For any non-zero rational number a by b and a positive integers n is a by b raised to power minus n is equal to कितना होता है हमारा? Yes, b by a raised to power n. So a by b raised to power minus n का मतलब है हमारा, हम क्या करेंगे? a by b को डिवाइड करेंगे a by b raised to power n से एंड ये इसका क्या है? फॉर्मूला है. और वी जस्ट सी द एग्जाम्पल ऑल्सो. सो -3 रेज टू पावर -1, सपोज वी हैव दैट नंबर. सो दैट मीन्स इट्स इक्वल टू -3/1 रेज टू पावर -1 इज सेम. ये हमारा इक्वल होगा 1 बाई -3 इज रेज टू पावर 1 और आंसर आएगा हमारा कम्प्लीटली -1/3. Similarly B part, here it is given 2/3 raised to power -3.
सो हम क्या करेंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो आंसर इज 27/8. I hope you understood this law also. So now move on next, which is solve examples. Example 1. Simplify and express with positive exponents. So here it is given 5/9 raised to power 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 raised to power -5 से. So how we just do that? We have to just add both the exponents. So exponent कितने हमारे 3 प्लस -5. So कितना हमारा आंसर आया 5/9 - 2 एंड देन हम उसको कैसे लिखेंगे 9/5 is raised to power 2. Hope you understood. Similarly B part. So B part में हम क्या करेंगे -7/15 raised to power -8 है और सेकेंड वन है हमारा -7/15 raised to power -11. So just add both the exponent and answer is this one. And then reciprocal that number. So -15/7 raised to power 18 is the answer. Hope you understood. Now example 2. Simplify and express with positive exponents. So here it is given 3/14 raised to power 4 को divide हमने करना है 3/14 raised to power -3. So what we need to do? We just subtract both the exponents. So exponents को हम क्या करेंगे subtract करेंगे और हमारा आंसर कितना आ जाएगा yes 3/14 raised to power 7. Hope you understood. B पार्ट में -5/11 raised to power -6 divided by -5/11 raised to power 5. So -6 और -5 को हम जस्ट क्या कर देंगे yes माइनस करेंगे. So 11 - 5 11 दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर बनेगा. सिमिलरली C पार्ट बेटा. नाउ एग्जाम्पल 3. Evaluate the following. So here it is given 2/7 raised to power -3 is raised to power 4. So what we need to do, we just multiply the exponents. So 4 3s are 12. So that is why 7/2 raised to power 12 is our answer. Like that. You just read that formula also. Okay. B part is -6/13 raised to power -5 is raised to power -3. So multiply both the exponent. So 5 3s are 15. So that is why -6/13 raised to power 15 is answer. Hope you understood well. Similarly beta C part and D part you have to do and practice well. Okay. So now move on next. So now next beta. Example 4. Simplify the following. So here it is given 5 raised to power -1 divided with raised to power -1 and raised to power -2. So हम क्या करेंगे सबसे पहले we know that a raised to power -1 that means ये होता है हमारा 1/a. So अब हम क्या करेंगे 5 raised to power 1 का मतलब होता है 1/5 डिवाइडेड हमने करना है 1/3 raised to power -2 से. ओके. सो हम क्या करेंगे 1/5. नाउ जस्ट डू द रेसिप्रोकल. 1/3 का रेसिप्रोकल हो गया हमारा 3/1. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इज मीन्स 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एंड 3 को 3 से करेंगे तो 9. सो दैट इज द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर वन. नाउ बी पार्ट. सो बी पार्ट हमारा क्या गिवन है लाइक दिस 5 raised to power -1 को मल्टीप्लाई करना है 3 raised to power 1 से एंड देन हमारा ये है raised to power -1 just divided with 7 raised to power -1. So we know that अगर हमारे पास है a raised to power -1 तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1/a by this formula. So what we need to do 1/5 into 1/3 raised to power -1 like this one divided with 1/7. So now after simplifying that one our answer is 105 like that way. Hope you understood. Similarly beta C part. Okay. So now move on example 5.
Find x so that 5/7 raised to power -5 इंटू हम करेंगे 5/7 raised to power -16 इज इक्वल टू होते हैं हमारे 5/7 raised to power 7x. सो हेयर इट इज़ गिवन. ओके, सो हम क्या करेंगे सबसे पहले, यस इन दोनों जो हमारे ये जो एक्सपोनेंट है -5 प्लस -16 को सॉल्व करेंगे. सो इट इज़ बिकम 7x. नाउ हम -21 इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 5 raised to power 5/7 raised to power 7x. So, in an equations when bases on both sides are equal, their powers must also be equal. So, that is why -21 हमारे कितने हो गए 7x is equal to x, that is equal to 21/7, that means x is equal to -3. I hope you understood. So, now example 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. सो इफ़ हमें क्या गिवन है 2/9 raised to power 3 मल्टीप्लाई बाय 2/9 raised to power -6 इज इक्वल टू होते हैं 2/9 is raised to power 2x - 1. सो फॉर दैट थिंग हम क्या करेंगे 2/9. सो एक्सपोनेंट 3 प्लस -6 को सॉल्व करेंगे. सो हमारा आंसर क्या आएगा, यस, सो इज इक्वल टू हमारे होते हैं 2/9, दैट मीन्स 2x - 1 इज इक्वल टू 2/9 -3 इज इक्वल टू 2/9 raised to power 2x - 1. In an equations when bases on both sides are equal, their powers must also be equal. So that is why x is equal to -2/2 or equal to -1. Hope you understood. Now example 7. In that find the reciprocal of the rationals number. अब रैशनल नंबर दे रखे हैं, हमने क्या करना है इसका रेसिप्रोकल्स करना है. सो हाउ वी जस्ट डू दैट 1/2 raised to power -2 just divided with 2/5 raised to power -3. So solutions 1/2 raised to power -2 divided by that number. So what we need to do, just reciprocal that number 2/1 raised to power 2 divided with 5/2 raised to power 3. So that means 2 raised to power 2, 1 raised to power 2 and 5, 3 and 2 raised to power 3. After simplifying that number, our answer is yes 32/125 and reciprocal of that number is yes, just reverse that number and answer is 125/32. I hope you understood the reciprocal of rational number. So now move on next. Example 8. If x by y is equal to 3/2 raised to power -2 divided by 6/7 raised to power 0, then find the value of x by y raised to power -3. We know that using these things a by b raised to power -1 हमारा क्या होता है, yes, it's equal to b by a raised to power n and a by b raised to power 0 का मतलब होता है 1. So अब हम क्या करेंगे, yes, let's start with that answer. x by y is equal to 3/2 raised to power 2 divided with 6/7 raised to power 0. So we just write it like that way. It's 2/3 raised to power 2 को डिवाइड करेंगे हम 1 से. So हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4/9. Now x by y raised to power -3 हमारे कितने होते हैं 4/9 raised to power -3 and we just write it 2/3 raised to power 2 raised to power -3 is same, just multiply that exponent. So 2 3s are 6 होते हैं. Now reciprocal that one. So answer is beta yes 3/2 raised to power 6. So that is how we just do that one. So example 9. So by what number should 1/2 raised to power -1 be multiplied so that the product is -5/4 raised to power -1. So beta let the required number be x. Then x into
1/2 रेज टू पावर -1 हमारा कितना बन जाएगा? यस, ये हमारा है -5/4 रेज टू पावर -1 के, ये दोनों इक्वल है हमारे. सो नाउ सिंप्लीफाई दैट वन. सो हमारा है x इंटू 2/1, दैट इज हमारा हो जाएगा 4/-5, दैट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -4/5 इज इक्वल टू, हैंस x हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4/5 से, एंड आंसर आएगा द रिक्वायर्ड नंबर इज -2/5. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच इज एग्जाम्पल 10. By what number should -3/2 raised to power -3 be divided so that the quotient is 9/4 raised to power -2? So हम क्या करेंगे? Let the required number be x. So हम वो नंबर क्या ले लेंगे? x है हमारा. Now what we need to do? We just divide that number. How we just do this? -3/2 बाय x हमारे कितने होते हैं? ये हमारे बराबर है 9/4 रेज टू पावर -2 के. देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो -2/3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू क्या होते हैं हमारे? 4/9 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स. सो दैट मीन्स जस्ट डिवाइड दैट नंबर एंड हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -3/2. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. सो दिस इज हाउ वी जस्ट डू इट. Now we just move on next topic, which is expressing very small numbers in standard form and scientific notations using exponents. So let's start with, a number is said to be in the scientific notations if it is expressed as a product of a number between 1 and 10 and integral power of 10. For example, here it is given, yes, 5,26,000. So how we just write it? 5.26 into 10 raised to power 5. Okay, and here it is given 93 crore. That means 9.3 into 10 raised to power 8 beta. Now we will express very small numbers also in a scientific notations. So very small number, that means we just take it 0.0007. So for that is now become is 7/10000. That is equal to 7/10 raised to power 5 is equal to, ये कितने हो गए हमारे? 7 into 10 raised to power -5. Hope you understood. Similarly next है 0.000678. ये हमारा नंबर है. अब हम क्या करेंगे? दैट मीन्स 6.78 हमारा कितना आ गया? Yes, it's in a 10 -4. 10 raised to power, that means -4. Hope you understood well. So now next. The number has to be between 1 and 10. So we move decimal points 4 places to the right sides. Hence the power of 10 is -4 beta. Now example 11. राइट द गिवन नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस. ये नंबर्स दे रखे हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है. सो सॉल्यूशंस, फर्स्ट वन इज 0.00512. दैट मीन्स इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया 5.12 इंटू 10 रेज टू पावर -3. वाई? बिकॉज मूव डेसिमल पॉइंट्स 3 places to the right to get a number between 1 and 10. Hope you understood well. So now B part, 0.00000083. इसका मतलब होता है we are just 8.3 multiply by 10 raised to power -7. That means move decimal point 7 places to the right side to get the number between 1 and 10. Hope you understood well that scientific notations. Now just example 12. So in that write the following numbers in a standard form. अब आपको standard form में लिखना है. So what's that is 6.72 multiply by 10 raised to power -3. So how we just do that? We are just multiply that number
So 0.00672, that means 6.72. Why? Move decimal point 3 places to the left side. हम 3 places को left side में move करेंगे decimal को, and answer is बेटा 6.72. Similarly B part, 1.76 multiply by 10 raised to power minus 8. So number क्या बना हमारा? 0.000000176. That means now move decimal points 8 places to the left side. This is how we just do in a standard form. Hope you understood well. So now example 13. Compare 4.67 into 10 raised to power minus 3. Compare करना है 4.76 into 10 raised to power minus 4 से. So let's start. 4.67 into 10 raised to power minus 3. If we just multiply both the number, answer is 0.00467. And 4.76 into 10 raised to power minus 4. So हमारा आंसर आएगा like 0.000476. So we know that this number is greater than that number. So of course we can say that 4.67 into 10 raised to power minus 3 is bigger. I hope you understood the compare concept. So now just move on, exercise 2.2. So here it is given, simplify and express with positive exponents. So how we just do that? First one is, this is big bracket and this is small bracket, 3 by 5 raised to power minus 2 and this one raised to power minus 4. So अब हमने क्या करना है? We are just do one by one. ये जो दो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं हम इसको क्या कर देंगे? जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 4 टूज़ा होते हैं हमारे 8 एंड माइनस माइनस इज प्लस. सो आंसर हमारा बन जाएगा 3 by 5 and 4 2s are 8 minus minus plus is 8. So like 3 by 5 raised to power 8 is that answer of that one beta. I hope you understood well. So these are the other questions beta. You have to complete it your own. Okay. So with this we ended the chapter. I hope you understood well. So do practice and do rest of these exercises by your own.